Hey everyone, how's it going? It's been a long while since I took a session on YouTube and I think this is the right time to do it. I welcome you to this session जहाँ पर आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स कोड 417 का NLP चैप्टर पढ़ने वाले हैं. But before we begin, a quick introduction if you do not already know me. My name is Aakash Singh. I'm a graduate from IIT Bombay, currently working as a software engineer. So without wasting any time, let's just begin with our session today where we talk about natural language processing. हमें पता है कि AI में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं. यू कैन प्रेडिक्ट कि आज रेनफॉल होने वाला है या नहीं. यू कैन क्रिएट सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूजिंग कंप्यूटर विजन. ऑन अ सिमिलर नोट देर इज ऑल्सो अ डोमेन नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जहाँ पर लैंग्वेजेस प्रोसेस करी जाती हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो हम लोग आज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे. द टॉपिक्स फॉर टुडे आर एप्लीकेशंस ऑफ NLP. वेयर आर द प्लेसेस दैट यू कैन सी NLP. डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको कहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखने को मिलता है. We will have a talk about chatbots. आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं chatbots. And these three things which are text normalization, bag of words, TF-IDF. Now देखने से लग रहा होगा they are quite complicated in nature. They are not. They are mathematics based. So that's why they are kind of easier to understand. We will discuss these three to understand how NLP works. Right, so these are the topics for today's session. I hope you are preparing well for your examinations, and this session will actually help you understand this concept in a better way. There will be upcoming sessions जहाँ पर हम लोग थोड़े question answer भी discuss करेंगे, but for now let's have a look at natural language processing. So before we begin, let's try to break this word down into its constituents. So processing का मतलब आपको शायद पता होगा. जब हम डेटा प्रोसेस करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं. लैंग्वेज ऑल्सो आपको पता होगा क्या होता है. द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर. द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि नेचुरल लैंग्वेज क्या है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. अ लैंग्वेज विच ह्यूमंस यूज टू टॉक टू ईच अदर इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज. ये बहुत टाइम से चलती आ रही है and people can talk in Spanish, Hindi, English. That kind of language is known as natural language. और ये artificial language अगर आप सोचोगे, they are actually the language which are used between humans and computers and between computers. So we won't talk about that. We will only talk about how computers can understand human language. So NLP is used to understand the human language which is used by the computers. There are couple of ways, couple of places where NLP is used. सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके फ़ोन में है. इफ़ यू आर यूजिंग एन iOS डिवाइस, अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हो, यू माइट हैव नोटिस्ड और माइट हैव यूज्ड इफ़ यू जस्ट ओपन योर वॉइस असिस्टेंट. जैसे मैंने बोला, हे सीरी प्लीज़ सेट एन अलार्म फॉर 7 AM. नाउ आपका अलार्म ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग. सो दिस इज़ वन वे वेयर NLP इज़ यूज्ड. अदर प्लेसेस, लेट्स से यू आर राइटिंग एन असाइनमेंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और मे बी अगर आप Gmail पे किसी को एक मेल सेंड कर रहे हो, यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स इन द स्पेलिंग्स और द ग्रामर. द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ट्राइज टू टेल यू बाय द यूज ऑफ दीज रेड अंडरलाइंस कि आपने कुछ वर्ड गलत लिखा है या फिर आपका जो ग्रामर है दैट इज नॉट राइट. सो दिस इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव यूज्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, गूगल हैज़ द बिगेस्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर. आप एक लैंग्वेज से किसी भी फ्रेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड देयर आर मोर देन 200 लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाय गूगल ट्रांसलेट. सो देयर आर द डे टू डे प्लेसेस जहाँ पर आप NLP देखते हो. सो लेट्स हैव अ लुक एट कपल ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पर आप NLP यूज़ करने वाले हो आगे. सो लैंग्वेज ट्रांसलेशन हम लोगों ने देख लिया, वर्ड प्रोसेसर्स देख लिया, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स क्या होता है. लेट्स से इफ यू आर डायलिंग इनटू एयरटेल की हेल्पलाइन में आपने कॉल किया एंड देन द वॉइस आस्क्स यू दैट प्रेस 1 टू टॉक टू एन एजेंट, प्रेस 2 टू व्यू और रिचार्ज. सो दैट इज नोन एज IVR. सो वी हैव डिस्कस्ड दीज 4 एंड देयर आर द प्लेसेस जहाँ पर NLP यूज होता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मशीन ट्रांसलेशन. सो कभी कभी ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा बड़ी बुक्स या फिर बहुत ज़्यादा मैनुअल्स कन्वर्ट करने होते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. उस टाइम पे हम लोग मशीन ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट माइट बी पॉपिंग इन योर माइंड इज, इसको हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्यों नहीं बोलते हैं. अ सिंपल एग्जाम्पल फॉर दैट इज कि आपका जो
सेंटेंसेस के मीनिंग्स होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं मशीन ट्रांसलेशन में. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हर्ड अबाउट दैट हिंदी इडियम, मेरी बिल्ली मुझे म्याओ. Now, if you convert this into English, it might sound like my cat is meowing at me. It does not make any sense. But in Hindi, it has a specific meaning associated. It means that you're working for someone who does not value your work. So, ये जो meaning है sentence का ये preserve हो जाता है using machine translation. And this translation can convert very large amount of texts from one language to another without any human involvement. So that is one way NLP is used. The other way NLP is used is at automatic summarization. Now this automatic summarization reduces the amount of words that you need to read. For example, I have copied this news article about Cristiano Ronaldo, which was about 268 words. Now, after I summarized it using this website, summarizingtool.net, आपके जो total words हो गए हैं वो है 86. All of the meaning from this article is preserved into these 86 words from 268. So this is a very beneficial thing about automatic summarization कि आपको बहुत सारा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जनरली न्यूज़ चैनल्स यूज़ करते हैं इस टेक्निक को. It also keeps the emotional meanings intact. As I discussed about machine translation, जहाँ पर आपका जो meaning of the sentence है वो same रहता है, automatic summarization में भी similarly आपका emotional meaning same रहता है. So one of the biggest applications of NLP that you can find in the world right now is sentiment analysis. I will start off with an example of Apple. We all know what Apple is. They create mobile phones, MacBooks, AirPods. So how does Apple know कि उनके जो devices हैं वो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं नहीं? Are people liking the devices or are they hating it? So this is where sentiment analysis comes in. What Apple tries to do, they try to analyze millions of tweets, millions of Facebook posts, millions of news articles, and then they try to classify if the person talking about Apple is happy or sad. So this is known as sentiment analysis to identify what customers think about their products and services. So right now we have three sentiments associated: positive, negative, and neutral. So how is this possible? Let's say there is a tweet which says, I love the new iPhone, but sometimes it doesn't work well. Now you can understand that person talking about the iPhone is kind of sad, or you can say that it is a negative sentiment. But as humans, we can definitely understand कि yes, किसी ने iPhone के बारे में बात की है and he's not liking the iPhone very well. But how does a machine do that? Again, by the use of NLP. Let's take a couple of examples of other tweets. So this was tweeted by Donald Trump, who was saying that the button on iPhone was far better than the swipe. I think he's talking about iPhone 10 or 11, जहाँ पर Apple ने iPhone का button stop कर दिया था. So he is not very happy about it. So we can say that it is a negative sentiment. The iPhone AI algorithm can solve even the most complex of problems. So now we can say that Christopher is very happy with his iPhone. We can mention that it is a positive sentiment. But we also saw something as a neutral sentiment. Neutral sentiment can have many forms. But let's have a look at this guy, Elon Musk. Now he has tweeted something blank, but the reason it was picked up is because he tweeted it using iPhone. So you can say that it is a neutral tweet. It's not positive, it's not negative. There are a couple of other applications of NLP जहाँ पर आप एक टेक्स्ट को क्लासीफाई कर सकते हो इनटू डिफरेंट कैटेगरीज कि एक टेक्स्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है या फिर स्पोर्ट्स के ऊपर है या फिर फैशन के ऊपर है एंड सो ऑन. So one of the most prominent examples would be spam filtering. So spam filtering में आप कैसे classify करते हो? You classify into spam or not spam, right? So discussing all these applications of NLP, we have to talk about something very advanced in nature, which are chatbots.
नाउ करंटली इफ़ यूर ऑर्डरिंग फ्रॉम स्विगी, अगर आपने अमेजोन से कुछ चीज़ ऑर्डर की, अगर आप कोई चीज़ डंजो कर रहे हो एंड यू फेस अ प्रॉब्लम विद इट, यू डोंट डायरेक्टली कॉल द कस्टमर केयर. देयर इज़ अ इंटरमीडिएटरी नोन एज अ चैटबॉट जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो एंड they try to solve it automatically using natural language processing. So let's see how that one works. For example, अगर आपका स्विगी ऑर्डर थोड़ा डिले हो गया एंड यू डू नॉट विश टू कॉल द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, राइट? सो आप क्या करोगे, आप स्विगी के ऐप पे जाओगे, यू विल क्लिक ऑन हेल्प, यू विल से दैट माई ऑर्डर इज डिलेड. You will get a reply from the chatbot saying that sorry, your order is on the way, it will be delivered in the next 5 to 10 minutes. For more information you can contact the delivery executive on such and such number. So that response is not written by a human. कोई human आपको टाइप नहीं करके देता है वो. That is actually a chatbot talking to you. Now chatbots are divided into two categories. One is a simple category जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करते हो, सिर्फ आप यूज़र को बोलते हो अगर यूज़र ने ऐसा कमेंट डाला यू नीड टू रिप्लाई दिस. सो दे आर नोन एज इफ एल्स चैटबॉट्स, रूल बेस्ड चैटबॉट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है. एंड द अदर टाइप ऑफ चैटबॉट इज़ द AI चैटबॉट. नाउ बेसिक डिफरेंस इज कि रूल बेस्ड चैटबॉट में आप सिर्फ एक या दो टाइप की चीज़ें ही चूज़ कर सकते हो, या तो आप येस में आंसर दोगे या तो नो में, या फिर अगर आपके सामने एक मेन्यू है 1 2 3 4, आप सिर्फ इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो. सो दिस इज अ रूल बेस्ड चैटबॉट. अगर आपने 1 चूज किया आपको एक रिप्लाई 1 मिलेगा, अगर आपने 3 चूज किया आपको रिप्लाई 3 मिलेगा. सो दिस इज अ रूल बेस्ड चैटबॉट. whereas an AI chatbot is very different in nature. अगर आप AI chatbot को कोई क्वेश्चन पूछोगे, it will try to solve your problem by using the natural language and not just replies which are actually fed into the system. जैसे virtual assistant over here is asking you how can I help you, whereas over here virtual assistant is asking would you like to receive an assistance, जहाँ पर आप सिर्फ yes or no में आंसर दे सकते हो, whereas यहाँ पर you can write down your problem. Okay, so from your board perspectives this is very important. I think you will get an answer question on this, so just take a screenshot of this slide which is discussing the difference between the script bot and the smart bot. Script bot is your if and else bot, आपका rule based bot जो है, whereas a smart bot is the one which implies that artificial intelligence is being used. Right, so you can look at all these points. Script bots are quite easy to make, ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, whereas smart bots use artificial intelligence. यहाँ पर आपकी limited functionality है, यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा functionality होती है क्योंकि this is actually a smart bot. It can understand what you're trying to say. ठीक है, so take a screenshot of this. I'll be coming up with a next video जहाँ पर हम लोग important questions from this chapter discuss करेंगे. So talking about human and machine conversation, there arises a point where we have to understand why is human language different than computer language, and the answer is very simple. क्योंकि computers सिर्फ 0 और 1 की language समझते हैं, which is basically binary. 0 stands for off and 1 stands for on. Why do you think that is? It's because computers run on electricity, right? And electricity can only have 2 states, either on or off. सो ह्यूमन लैंग्वेज में बेसिकली रूल्स होते हैं, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स जहाँ पर आपके नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, वेयर एज कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी रूल्स बट इट कैन ओनली अंडरस्टैंड इफ द नेचुरल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स फर्स्ट. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. तो जब भी किसी ह्यूमन को मशीन से बात करनी होती है या फिर मशीन को ह्यूमन से बात करनी होती है, एक कन्वर्टर का यूज होता है. सो हाउ डज NLP कम इनटू दिस? सिर्फ एक कन्वर्टर के थ्रू आप कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व. आप जो ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहे हो उसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उन नंबर्स को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ऑल दीज ग्रामेटिकल रूल्स जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, दे कैन एक्चुअली हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, बट दैट इज नॉट इनफ. सो इन द नेक्स्ट पार्ट we will try to understand how you can convert human language into something a computer can actually understand.
सो देर आर सम डिफ़िकल्टीज जो हम लोग नोटिस करेंगे अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो ह्यूमन लैंग्वेज को नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में, लाइक सीइंग टू मीनिंग्स। जैसे बॉक्स के दो मीनिंग हो सकते हैं, आपके नोट के दो मीनिंग हो सकते हैं, आपके टायर, fence, all these words have multiple meanings. So even if you convert one word into something a computer can understand, how do you make sure that computer can also understand the difference between the meanings of the words? So that is quite complicated in nature. Also same word, different context. यहाँ पर same word is red and हर एक sentence में इस word का meaning अलग है. So first one, his face turns red after consuming the medicine. You can say that it is an allergic reaction, right? Red का मतलब वो है. The red car zoomed past his nose. So this is actually the color we are talking about. His face turned red after he found out that he took the wrong bag. So उसको actually शर्म आ रही है. He's actually ashamed. So even using the same word, we have different meanings in natural language. So this becomes kind of difficult to make computers understand, is it not? Also, as we were talking about grammar, natural language is quite confusing. Even if you use the correct grammar, it might happen कि आपके sentence का कोई मतलब ही नहीं है. So chickens feed extravagantly while the moon drinks tea. This sentence is grammatically 100% right, but it does not convey any meaning. So these are a couple of difficulties which we need to solve while making computers understand the natural language. So the first step is to convert our language into numbers. So this would be the first step. अगर आप natural language processing में काम कर रहे हो, अगर आप कोई project create कर रहे हो, the first step would be to convert your English, Spanish, Hindi into a form which can then be converted to binary. So numbers में convert किया जाता है, generally decimal numbers. Now it has three parts, natural language processing. We will have a look at those. All right. So the first step is text normalization. Now we can say that मुझे एक essay convert करना है, or maybe if I want to convert a novel. Now these text documents are very big in nature. So what text normalization does is, it first of all cleans the text. आपके punctuation marks remove हो जाते हैं, आपके जो sentences हैं उनको break किया जाता है छोटे words में, ताकि जो कंप्यूटर है इजीली समझ पाए इन सब चीज़ों को. सो दैट पार्ट इज नोन एज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. फिर आता है आपका बैग ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर एक्चुअली डेसिमल्स में कन्वर्ट किया जाता है आपके वर्ड्स को. एंड द थर्ड स्टेप इज TF-IDF, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. द फर्स्ट पार्ट टू टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन इज यू convert your text you divide your text into sentences. जैसे मेरे पास यहाँ पर दो sentences है, sentence 1 and sentence 2. Using sentence tokenization, I will divide this into two parts, sentence 1 and sentence 2. If you see, this is a list of sentences. That's why it is separated by a comma. Okay. So sentence tokenization means your document is divided into sentences. Next part is word tokenization. If you are getting confused between tokenization का मतलब होता है to create smallest divisional part. If I ask you Indian currency के tokens क्या है, so you can say ₹1, ₹2, ₹10, ₹20, ₹100. So they are the tokens of Indian currency. Similarly, if I want to convert a text into word tokens, I will divide the text into its individual words, right? So now again, this is a list of words.
This is known as word tokenization. Next part, after we have converted the text into smaller units, we remove the stop words. Stop words are very commonly occurring words जैसे आप a, an, and, as, for. These words are important for grammar, but they don't actually convey any meaning. So they are also known as stop words because they occur very frequently, but they do not add any value to the text. So थर्ड पार्ट में हम लोग ये सारे वर्ड्स निकाल देते हैं ताकि जो सेंटेंस है आपका थोड़ा छोटा हो जाए, उसमें आपके रैंडम वर्ड्स निकल जाए. It's like saying Ankit likes to read books and he is not too fond of movies. Now, if I remove the stop words, if I remove the continuously occurring words and only keep the meaningful words, it will look like Ankit likes read books, fond movies. Now we can see that meaning is preserved, but आपके जो stop words हैं वो निकाल दिए गए हैं ताकि when we feed these words into the computer, it doesn't have to process a lot of things. Next part is converting text into a common case. Now very easy to understand. आपके जो भी upper case letters होते हैं, small case letters होते हैं, mixed case letters होते हैं, आप सबको एक similar case में convert करते हो, which is generally the small case. Now text normalization में last two things are quite important. It is known as stemming. Now I will take an example to make you understand. We have these words like affected, troubling, amused, closely. If you look at them, there are some suffixes attached. Word के पीछे कुछ extra words attached होते हैं which tells us about its form of tense. But if we start removing them, like मैंने यहाँ से ed निकाल दिया, so आपका जो word बनेगा that is affect. It is conveying the same meaning as the original word. Again troubling में से मैंने last ing निकाल दिया, so trouble बना. However, it does not make any sense, but this is what stemming does. It is a process जहाँ पर हम लोग जो affixes हैं किसी भी word के end में जो words लगे होते हैं हम लोग उनको completely remove कर देते हैं. It does not matter कि final word आपका meaningful हो या नहीं, but this is the process of stemming. Now if we talk about a similar process to stemming जहाँ पर meaning of the word भी preserve रहे, final word जो आपका बन रहा है उसका भी meaning रहे, उसको हम लोग बोलते हैं lemmatization. For example, troubled, इसका जो parent form है, इसका जो lemma form है, जो अगर आप डिक्शनरीज में ढूंढोगे, आप डिक्शनरी अगर खोलोगे उसमें आप ये troubled word search नहीं करोगे, you will search for the word called trouble. So converting a word into its dictionary form, a meaningful dictionary form, is known as lemmatization, जहाँ पर affixes निकाले जाते हैं but end word carries some meaning. जैसे ट्रबलिंग को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया ट्रबल में, चेंजेस को कन्वर्ट किया चेंज में, चेंजिंग विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू चेंज. सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स एसोसिएटेड विद टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन. हम लोग टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं? बिकॉज वी नीड द टेक्स्ट टू बी नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी वेरी सिंपल. सो वी डिवाइडेड इट इनटू वर्ड्स. हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, हम स्टॉप वर्ड्स निकाल देते हैं, we convert into a same case, smaller case में convert करते हैं, and then we do stemming or lemmatization. What is the difference? Lemmatization gives you a meaningful word, whereas stemming does not give a meaningful word. But why do we then use stemming? Stemming is generally used because it is faster in nature. जब हम लोग processing करते हैं, stemming is very fast, whereas lemmatization is kind of slow. So this was about text normalization. हम लोगों ने अपना टेक्स्ट पूरा क्लीन कर दिया है एंड हम लोगों ने टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत रिड्यूस कर दी है. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कन्वर्ट दीज वर्ड्स इनटू नंबर्स. सो द स्टेप वी यूज इज बैग ऑफ वर्ड्स. सो टू अंडरस्टैंड बैग ऑफ वर्ड्स क्या करता है, it converts each word into a number so that computer can understand it. We ignore the location of the words. For example, if I have a sentence like
this. So I have two sentences. Now using bag of words, I can convert each of these words into something numeric. For example, this is converted into 0.48, 0.32, 0.71, right? So eventually when the machine looks at all these numbers, it does not matter कि आकाश पहले आया था या फिर कंप्यूटर साइंस पहले आया था. All of these numbers are jumbled up, but they represent the specific words. I hope it is not too complicated. If it is, हम लोग step wise देखेंगे कि ये numbers actually आते कैसे. So please give me a moment. So this is the example. हमारे पास एक बहुत बड़ा text है about coronavirus. There are probably 20 sentences here. Using bag of words, we convert this into something known as a frequency table. So for each of the words occurring inside this text, हम लोग लिखते हैं, for example, though has 10 occurrences, off has 4 occurrences, coronavirus has 4 occurrences. Now, if you remember text normalization, the off are stop words, but यहाँ पर हम लोगों ने stop words नहीं निकाले, just to take an example. ठीक है? So first step is to convert the tokens into numbers. एक एग्जाम्पल देखते हैं. देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद अस. डॉक्यूमेंट 1 में लिखा है रिया एंड रॉय आर एंग्री. डॉक्यूमेंट 2 में लिखा है रिया वेंट टू अ डॉक्टर. डॉक्यूमेंट 3 में लिखा है रॉय वेंट टू डाउनलोड अ मेडिटेशन चैटबॉट. So these 3 documents, first step would be text normalization. If you remember, टेक्स्ट को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, राइट? सो यहाँ पर आपका जो सेंटेंसेस है इंडिविजुअल वर्ड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नाउ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. स्टेप 2 would be to create a dictionary of all these documents. What does dictionary mean? Dictionary mean कि जो जो vocabulary यूज़ किए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिया वर्ड यूज़ हुआ है तो अपने रिया वर्ड को डिक्शनरी में डाल दिया. नेक्स्ट वर्ड इज एंड, आपने एंड को डिक्शनरी में डाल दिया. सो नाउ इन अ डिक्शनरी नो वर्ड इज रिपीटेड ट्वाइस. आप देखोगे हर एक वर्ड सिर्फ एक ही बार अकर करता है. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. थर्ड स्टेप वुड बी टू क्रिएट अ कॉलम लाइक दिस. मैंने डिक्शनरी के सारे वर्ड्स एक कॉलम में लिख दिए, right? Now after I create that column, the first step would be to talk about document 1. ठीक है, so document 1 में क्या लिखा गया? Ria and Roy are angry. Now all those words which occur in document 1 are marked as 1. जैसे Ria and Roy are angry. So all these words have frequency of 1 in document 1. Moving on to the next document, document 2. Document 2 is Ria went to a doctor. So document 2 में Ria went to a doctor. So यहाँ पर हम लोग 1, 1, 1, 1 and 1 लिखते हैं. The third document is Roy went to download a meditation chatbot. So this is document 3. Roy went to download a मेडिटेशन चैटबॉट. सो रिस्पेक्टिव कॉलम्स में आपके 1 ऐड किया गया. नाउ यू माइट आस्क व्हाई ओनली 1. अगर कहीं पर भी जैसे डॉक्यूमेंट 3 में ए 2 बार आता, अगर यहाँ पर ए एक एक्स्ट्रा आता, सो यहाँ पर आप इसके बदले लिख देते 2. सो दिस टेबल इज नथिंग बट कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इनसाइड द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट. Alright, so I hope you have understood this step of bag of words. And finally, this is actually known as the bag of words. This is the document vector table or maybe just frequency table अगर आप बोलोगे, that is also okay. But
tokens have still not converted into numbers. हम लोगों ने हर एक word को एक frequency के form में लिख दिया है, but it still is not converted into a form that computers can try to understand it. So this leads us to our final step, which is TF-IDF. So if you're finding this complicated, I would suggest you start making notes and maybe go through the video one more time. It would help a lot. Anyways, let's move on to the next step, where we convert all these frequencies into something that the computer can actually understand. Why is TF-IDF actually used? So let me give you a fact. You might be reading a lot of books. Let's talk about Harry Potter or maybe Lord of the Rings. अगर आपने A Brief History of Time पढ़ा है, or for that matter any book in the world, 80% of the words are actually filler words. They do not convey any meaning, whereas only 20% of the words have any meaning associated with them. This is known as the Pareto principle, which tells us this. However, why I'm talking about this is because TF-IDF tells us which word is a stop word versus which word is a rare or valuable word. It actually associates a certain value. For example, A का value हो सकता है 0.01, 2 का value हो सकता है 0.03, whereas something, a word like football, which actually carries a meaning, could have a value of 0.6. So this is the y-axis, this is the x-axis, value axis, which tells us lower the value of a word, more frequently it is occurring, which means it's a stop word, whereas जिस word का value थोड़ा ज़्यादा है, it means it is conveying a lot of meaning. So how do we calculate TF-IDF is like this. So TF-IDF stands for term frequency and inverse document frequency. So हम लोग हर एक word को उसका meaning देंगे first of all. So this is nothing but document vector table or word frequency table, जो भी आप इसको बोलो. Term frequency is the frequency of word in a document. Now we have this dictionary, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले back of words में पढ़ा. This is document 1, this is document 2, this is document 3. If I say document 2 में कौन कौन से words आ रहे हैं, I can see this word, this word, this word, this word and this word. So I can say that document 2 is nothing but Aman went to a therapist, right? Similarly आप document 1 and document 3 के लिए भी उसको create कर सकते हो. So term frequency is nothing but the frequency of the word occurring in a document. Next part is document frequency. It is nothing but the number of documents number of documents in which the word occurs. For example, right now Aman occurs in 2 documents. The word therapist occurs only in 1 document. So जो आपका English language में meaning है, similarly इसमें भी same meaning है. Earlier it was term frequency. एक term कितनी बार आ रहा है? Document frequency मतलब एक term कितने documents में present है? And finally we convert the document frequency into its inverse form. Now we know that Aman is occurring in 2 documents and is occurring in 1 document. Anil is occurring in 2 documents. So inverse document frequency कुछ नहीं करता है. आप इसको पहले invert करोगे and then you will multiply it with the total number of documents. We know total number of documents is 3. So we get 3 by 2 for this. So for each of these terms, we just invert the document frequency and multiply by the total number of documents. For example, Anil के लिए बनेगा 3 by 2, R के लिए बनेगा 3 by 1. So this is known as the inverse document frequency. However, this might not be in your syllabus, but let's look at how to calculate TF-IDF. TF-IDF
is calculated like term frequency multiplied by log of inverse document frequency. Now we have seen that this is a number, this is a number, and finally TF-IDF is also a number. Make sense? Now let's have a look at this table just to see how a meaning is conveyed. If I look at and, it has a value of 0.477, whereas Aman has a value of 0.176. This is how your machine learning model or NLP or a computer can see these words. By converting these words into numbers, we are making it easier for the computer to understand. Alright, so this was about TF-IDF. How is it important? It helps us classify the documents. हम लोगों ने NLP के जितने भी applications देखे थे, they're actually done by the use of TF-IDF. जितने भी आपने अभी steps देखे हम लोग mathematically कर सकते हैं, but right now we have a lot of libraries in Python which can actually do it. One of the major libraries NLTK library, जिसमें आपको ये सारी functionality available होती है. आप topic modeling कर सकते हो, classifying the document on the basis of the topic which is talking about, information retrieval system, stop word filtering, all of these are actually done by TF-IDF. So with this, we have finished this topic of natural language processing. Now I again repeat myself, I have uploaded a video after a very long time because this part took me a very long time, and it would be really great if you can like this video, share it among your friends. I would be really happy if you subscribe to the channel. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.